Hi guys, this is Dr. Sadasivam once again with you. भाई आज निफ्टी आपने देखा होगा जैसे सीसा की तरह काम कर रहा था। निफ्टी जो है 18,000 450 तक पहुंचने के बाद ऐसा गिरा 18,200 तक पहुंच गया था। जिन्होंने भी कॉल ऑप्शंस बेचा उनकी तो लॉटरी खुल गई थी। जिन्होंने पी जो बेचा हुआ था दे वर ऑल रनिंग फॉर आवर कवर एंड दे वर रनिंग ऑल अक्रॉस। कल भी ऐसे ही था भाई, 2-3 दिन से देखेंगे डेली ऐसे ही, कभी ऊपर कभी नीचे। Lots of uncertainties. I've put in a lot of videos, and in this video we're going to look at what the outlook will be. Investors are so confused. Morgan Stanley had released a report and I will be explaining that. भाई वेस्टर्न मार्केट्स में तो रिसेशन हाई ही है, उसमें कोई शक नहीं है। और कल भी मैंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें ये फोकस किया था। But if you look at Asia, the direction is going to be extremely good, and that's going to be totally opposite. You're going to look at some data. China is unleashing a new wave of growth. The trends are extremely positive, and it's not me who is saying this, it's the Morgan Stanley's analysis. They have upped the growth for China, and there's going to be a major shift, be it in policy, environment. They will focus on growth, they will work on multiple fronts, and there will be faster pace of reopenings. Today, some deaths have been reported. We will talk about all that. Those are minor things. We need to wait and watch. Yes, there are some problems. We will talk about that. What will be the impact? But on a larger time frame, if you see, things seem to be very, very positive. Now, Morgan Stanley, they have upped the GDP forecasts to 5.4%. The property market is getting revived, and we are all aware of what problems they had faced. They had private sector had a lot of issues with the government because of strong regulatory governments, but Chinese government is doing everything possible to revive the confidence, and a lot of regulatory conditions have been eased. And the next $1 million question is our Indian investors are asking कि यहाँ पे क्या होगा। भाई एक चीज ध्यान रखना, इंडिया अनदर इंजन ऑफ ग्रोथ है भाई, डबल इंजन है। एक तो इंडिया का ग्रोथ इंजन है, दूसरा चाइना है। Lot of people are saying that if China grows, then investors will leave India and start going to China. इसको wealth effect कहते हैं, macro economics, all that will decline. People have this doubt. By I will answer all these questions, not to worry. But from a macro perspective, if you look at it, it's going to be extremely good for India. And of course, dollar will be peaking. And for the dollar to peak, there are two conditions that are required. One is the Fed expectations, which has happened. The second is the growth differential between the US market and the emerging markets, right? To a very large extent, it's working in favor of Asia today. और मॉर्गन स्टैनली का फोरकास्ट ये भी कह रहा है, ये जो ग्रोथ डिफरेंशियल है वो दैट विल स्टार्ट ड्राइंग मोर एंड मोर कैपिटल्स। नाउ इक्विटी मार्केट में भी लोग कहते हैं कि चाइना में पैसा चला गया तो इंडियन मार्केट में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, if you look at the whole of 2022, there has been lots and lots of fund outflow from China, but that doesn't mean that money came to India. India also money went away. There has been a big outflow of funds from the capital market. But what I'm trying to say is overall sentiments will improve. There's nothing to do with China directly as far as this is concerned, but indirect benefits will be there. In any case, India is running a trade deficit as far as China is concerned. Now, if you talk about China plus one strategy that everyone talks about, that will keep happening क्योंकि चाइना का ग्रोथ से इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। चाइना भी बढ़िया करेगा, इंडिया भी बढ़िया करेगा, इमर्जिंग मार्केट्स भी बढ़िया करेगा। कि जो अच्छा नहीं करेगा वो यूएस एंड यूरोप है। भाई हमारे कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन वन हैंड इफ यू सी, इट इज एमर्जेंस ऑफ अ मल्टी पोलर वर्ल्ड। भाई जो भी जियो पोलिटिकल टेंशन है धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और भाई एक और चीज है, जापान को बात करिएगा, बैंक ऑफ जापान रिसेंटली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिया भाई। वो भी पूरा दुनिया बात कर रहे हैं, वो भी उन्हीं के रास्ते पे चल गए हैं। उनका भी यही टारगेट है, 2% इन्फ्लेशन तक कराना है। उनको तो सब कुछ करना है।
जापान का भी जीडीपी देखेंगे कोविड से 1.9%। एक बार तो कर दिया इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, एक बार तो कर दिया, फ्यूचर में करेंगे नहीं है भाई। वन थिंग यू ऑल नीड टू कीप इन माइंड, Chinese economy is opening up. Once again, let me tell you, Chinese COVID death, all that is happening. We will see what happens in the next 1 or 2 days. But overall, if you see, once if China comes back on track, there will be huge demand for oil, especially crude oil तो 1 मिलियन बैरल पर डे जाएगा, इतना डिमांड आएगा तो ऑयल के प्राइसेस, क्रूड का प्राइसेस भी बढ़ेगा। वो कह रहे हैं $10 तक ऊपर भी बढ़ सकता है। चलो जी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स, बट ओवरऑल इफ यू सी, till such time inflation needs to be controlled, interest rates will keep on going up, but maximum कर दिए हैं। हो सकता है 1 फरवरी में हो, 1 मार्च अगले साल में हो, because the terminal rates we are talking about which is 5.1 already it has been achieved। और क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा इंट्रोल भी कंट्रोल में आ गया है, इंटरेस्ट रेट्स भी कंट्रोल में आ गया है, उसके बाद तो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होगा नहीं है। स्टॉक मार्केट्स और बढ़िया होने वाला है। और आज का मार्केट कभी ऊपर नीचे, छोटी सी चीज है, ये सब के बारे में इन्वेस्टर ज्यादा चिंता नहीं करना है। इंडिया का देखेंगे, कैपेक्स है, गवर्नमेंट कैपेक्स है, प्राइवेट कैपेक्स है, हर चीज बढ़िया हो रहा है। बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है। जीडीपी फोरकास्ट देखिए भाई, इंडिया का 6.5% है, चाइना 5.4 है, इंडिया 6.5% है, जीरो, यूरोप तो 0% है, यूरो 0 है, यूएस में रिसेशन है, वहाँ मैक्सिमम आई थिंक दे विल टच 0.7%। एंड पूरे दुनिया में देखेंगे इंडिया टॉप नंबर 1 में रहेगा भाई। जय हिंद, एंड दिस इज सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। बाय बाय, जय हिंद।